बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं. I would love to see larger numbers क्योंकि this is a very beautiful cause and मैं धन्यवाद करना चाहूँगी and actually congratulate भी करना चाहूँगी to the Subramaniams because they have thought of something which is really not only a beautiful gesture, but I think it's something that will really help our planet, help us as human beings, and help our further generations ahead to value, to appreciate, and preserve and conserve our wildlife and our environment, which is so dear to all of us here. Like I said, I'll make this a little short and sweet because I think a lot of everyone's waiting to go get inside and actually see the exhibition. So please do, take part, and how you'll also be taking part is by contributing your bit to the planet, and we will be really thankful and appreciate that gesture. Like she said, a lot of people have taken part. Chitra very nicely said that a lot of people have taken part, professionals, professional wildlife photographers, etc. I would like to tell you right from the beginning that I'm an amateur. I've just started and I really enjoy this not only as a hobby, but it's my passion, and the fact that I love to see nature in its best, and that is left untouched, virginal in our forests of this country. So let's do our bit as citizens, as human beings, and help save our fellow creatures who exist on this planet. So thank you very much, and thank you for making me a part of it, Chitra. A big thank you, Anusha and Nandini as well. Sarita, sorry. Yeah. No, I didn't say Chitra. Nandini, I was calling you Nandikati yesterday. So thank you so much, everybody, for having me here this evening. Thank you.
थोड़ा पकड़ थोड़ा पीछे ना मागे आना थोड़ा मागे आना You know about our cause? सगळ्यांना सांगते मी सर्वांना सांगते मी Basically, थोड़ा मागे आना पहले इनका बाइट्स कर लेते हैं फिर जंगल में बहुत पानी होगा वगैरह ऐसा बाइक अपना बाइक वो इधर है नीचे बैठ आदित नीचे बैठ आदित नीचे बैठ Basically, we want people to come, so we organized this H2 photo exhibition where 75 photographers have given their images. And we want people to come and help in this fundraiser so that we can provide the solar pumps. They are expensive, they cost 2 lakhs to 5 lakhs each. बूम डाउन ना बूम डाउन Okay, are we rolling? हाँ रोलिंग Sarita, we'll like to begin with you. Tell us something about it. मोबाइल Okay, we are part of Earth Brigade Foundation and we have Project Aquarius where we provide solar pump sets for drinking water exclusively for wildlife inside our forest. Unlike common perception, wildlife suffer in summer months during summer months to get water, drinking simple basic water. So we provide solar pump sets inside the forest in collaboration with the forest department so that the animals do not migrate towards human dominated settlements, because this migration causes man-animal conflict situations and we do not want that situation to arise. So we give them the solar pump sets inside the forest. Now, as part of the fundraiser, we have already given in Bandipur, Kana National Park, and we are going to give in Painch National Park end of the month. But obviously, we need to give much more. So we have this fundraiser called H2 Photo, which is a wildlife photography exhibition where 75 photographers have generously given their prints free of cost. We have printed them in high class printing and canvas, and we hope that Mumbaikars and others will pick up the prints to help in our fundraiser so that we can give more such pump sets. Right. Gracie, how does it feel for you to be here today? इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग बहुत ही मुझे प्रेरणा मिलती है वेरी इंस्पायरिंग टू सी द फोटोग्राफी एंड टू लर्न अबाउट देयर कॉज इट्स ऑल अबाउट सेविंग लाइफ एंड दे हैव सो मच कंपैशन फॉर एनिमल्स so I feel that life is very very precious. It's a gift of God, and saving any life, चाहे वो जानवर है, प्रकृति है, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, हमें उसे सुरक्षित रखना है. So save planet, save life. That is the motto of this, and I'm very happy to be a part of this, and I would like to congratulate them for the wonderful work they have Thank done. you so much, Gracie. Mr. Thank you. Subramaniam, your thoughts? Yeah, so our project is basically very capital intensive, which is why we have planned this exhibition. It's a fundraiser, and we hope that people will open their hearts and their purses and give us more money to work with for this cause, because there are very few people working genuinely for wild animals, and we want to make that difference to their lives, because their lives impact ours in very different ways which we don't understand now. But it's very important to see that our wildlife survives and it flourishes in our forests for ensuring our own survival. Thank you so much. मैम नेशनल हाइजीन डे आने वाला है 28 मई जी हाँ. इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि इंडिया में हाइजीन को लेकर महिलाएं आज भी इतना ये नहीं करती, ध्यान नहीं देती. अवेयरनेस अभी हो रही है, और आपके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि मीडिया इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे, इसका हाइजीन का, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो पूरी जगह पे जैसे भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो Actually, through our Earth Brigade Foundation, we also have a Pink Brigade initiative where we provide sanitary napkins free of cost to Adivasi women across the country, tribal women across the country, and we also give them, which helps them improve their menstrual health hygiene. And we hope that if you empower the women and they are healthy, our nation is healthy. It's as basic as that. Thank you. Thank you. We would like to request the founders and the directors, Mr. and Mrs. Subramaniam, to please also join Gracie Singh on stage, who has graced the occasion for us on the board.
Well, we would like to also share a token of appreciation of your presence here. Kindly, we would like to welcome you with you. Look here, ma'am. This way, please. The cameras one step back. राकेश पीछे जाना, पीछे जा थोड़ा तो विजुअल कैसे मिलेगा तेरे को? तो एक स्टेप पीछे जाइए ना, जगह है. आदिल We also do provide sanitary napkins for women in these forested areas. Okay. हाँ जी, रेडी? बोलिए. ये काफ़ी साल से कर रही हूँ मैं. एक्चुअली 10 साल से मेरा हॉबी है. पहले तो एमेचोरिश करती थी, अभी भी एमेचोर हूँ. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी करती हूँ. कभी कभी फ्लूक से अच्छी पिक्चरें निकल आती हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि सरिता जी ने अप्रिशिएट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई. लेकिन मुझे शौक़ है वाइल्ड लाइफ का, और आई थिंक 1 साल में 2 बार तो मैं और मेरे बच्चे तो किसी न किसी जंगल में निकल ही जाते हैं. आई थिंक कनेक्टेड मैं पहले से ही थी, इसलिए मैं ये मोमेंट्स को समझ पाती हूँ. अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपका ये पैशन भी नहीं होगा. तो और सब जानते ही हैं कि काफ़ी अरसों से मैं वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट के लिए भी काम करती आ रही हूँ. एंड मुझे खुशी है कि मुझे बहुत ही ऐसे सिमिलर सोच वाले लोग, सेम सोच वाले लोग, ये जो दंपति हैं सुब्रमण्यम, इन्होंने भी बहुत काम किया है हमारे प्लैनेट की तरफ, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे वाइल्ड लाइफ की तरफ. तो मैं समझती हूँ बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है जो हम लोग ने इस बार लिया है कि all the proceeds of this sale of our photography will go to making solar pumps. तो ये बात में ये समझाएंगी, आई थिंक ये बेटर रहेंगी इस बात को समझाने के लिए. Yeah, I'm Sarita Subramaniam. I'm part of Earth Brigade Foundation, an NGO based in Mumbai. As part of our project Aquarius, where we provide solar pump sets for drinking water exclusively for wildlife, we donate the solar pumps from a company called AK Solar Pumps. We collaborate with the Forest Department to identify the sites, and we provide them the solar pumps. Now this ensures that the wild animal does not stray outside the protected areas, and they remain in the forest and they are safe, both humans and animals. And we truly appreciate Ravina ji's overwhelming support and spontaneous support to help our cause. We are truly grateful to her to help us with this cause. Thank you so much. Thank you. Yeah. तो आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया में अभी कुछ जगह पर हाइजीन का आई थिंक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इसके बारे में, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज खुले में ये बात हो सकती है. और इसके बारे में कोई शर्मनाक या शर्मिंदगी जो बहुत पहले मैं कहूँगी नियरली 10 years पहले जब होती थी लड़कियों को इसके बारे में बात करने या डिस्कस करने या केमिस्ट की दुकान के पास भी जाने में, पैड्स खरीदने में जो एक हिचकिचाहट होती थी वो अब नहीं है. एंड लोग समझने लगे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल thing. This has been given to us creatively, so it's nothing के शर्म होने वाली बात या any kind of impurity attached to it. ये सब जो पुराने हैं इसके साथ जो जुड़े हुए रीति रिवाज वो भी अब ख़त्म हो जाने चाहिए धीरे धीरे, उसकी आशा करते हैं. और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी जो सरिता जी ने बताया कि ये जो इनका ट्रस्ट है ये साथ में वाइल्ड लाइफ के साथ काम करते हुए भी जो इन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के फ्रिंजेस
विलेजेस हैं, उधर काफ़ी गांव हैं जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द हैं, तो अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशन उधर की औरतों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी एडुकेट करते हैं एंड सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो जंगलों के इर्द गिर्द गाँव हैं उनकी महिलाओं को, उनके परिवारों को भी कनेक्ट करें, तो हमारे एनिमल्स भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड एक काइंड ऑफ वर्क फॉर द कम्युनिटी भी हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।